सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस जॉर्डन मेथड, जिसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि जो जॉर्डन मेथड होता है, जो गॉस जॉर्डन मेथड है, वो क्या होता है और क्या ये कहना चाहता है। So first of all, some people may also called what called that some people called it inverse, that inverse of matrix, inverse of matrix by the elementary operation, है ना, by the matrix method, by the matrix method, okay, oblique elementary operation, oblique elementary operation. Okay, so this is same thing. So the thing is कि इसका इतने सारे नाम क्यों हैं और क्या है, तो हर एक राइटर का अपना अलग अलग कंसेप्ट है। द थिंग इज द लॉजिक बिहाइंड इट, that is a equality. The logic behind is that is a concept of, that is a concept of equivalence matrix. Okay, equivalence matrix. And equivalence matrix is represented by this terminal sign. Okay, this term is known as equivalence sign notations. So what the equivalence concept of equivalence means, suppose you have a matrix A, that is the given matrix. So let the given matrix, the A, the given matrix okay is equivalent to the identical matrix, is identical matrix, is the unit matrix, okay, of same order, of same order as given matrix. So so if we apply some elementary operation, so if we apply if we applied elementary operation okay, both side, then what happen, your A will convert, your A will convert to the identity, A will convert to I, then the equivalence of I, that I itself will convert the A inverse. So this is the concept. Okay, so what we can say,
So what we can say, so the conclusion, we conclude it that what we can say that the elementary that the elementary row oblique column transformation which reduce a square matrix A to the unit matrix I. Okay, when applied to the unit matrix gives the inverse. Okay, inverse matrix A inverse. So the thing is, suppose the A is a given matrix, so the equivalence matrix will be I. If we apply the elementary operations or transformation within A and I, then A itself convert into the I, and equivalence to I itself, the I will convert to its inverse, and it will be known as that A inverse. Okay, so this is the concept. चलिए अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं, अगली क्लास में, कि इस पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए. सो अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, उसमें हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, 1 से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जॉर्डन मॉडल, जो जॉर्डन मेथड था आपका, गॉस जॉर्डन मेथड, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लगाते हैं और उसको इन्वर्स कैसे निकालते हैं. ओके, सो कंसेप्ट तो वही है कि इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हम कन्वर्ट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस लगाएंगे, तो ए इटसेल्फ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई में, और आई इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडेंटिटी है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं. सो कंसीडरिंग द आइडेंटिटी, कंसीडर द आइडेंटिटी. ओके, और आपकी आइडेंटिटी क्या थी? आपकी आइडेंटिटी थी दैट A equivalents to I, or some people known as A equal to IA. So choice is yours. आप इसे क्या लिखना चाहते हैं? दोनों ही सही माने जाते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे उसको करना चाहते हैं. So up to
12th क्लास तक जो है 12वीं क्लास तक टीचर्स या फैकल्टी ये इसको प्रेफर करते हैं, बट इफ़ यू गो बियॉन्ड द 12th क्लास से बियॉन्ड जाएंगे आप, बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक वगैरह में जाते हैं, तो बेसिकली आप इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, एंड बोथ कम द कंसेप्ट फ्रॉम द इक्वलिटी। ओके, सो इसी चीज़ को बेसिकली हम इक्वलिटी कंसेप्ट कहते हैं, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स या कंसेप्ट ऑफ। सो दिस इज बेसिकली द concept of equivalence matrix. Okay, so this is the concept. So I hope you might understood. So चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं. So as you know that given a problem is that given problem that A, the matrix A is 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1. So this is the given matrix. So as you know here the row 1, row 2, row 3 and column 1, column 2, column 3. Okay, so as you know that these are the rows and these are the columns. So this will be column, these are the column and these are the row. Okay, so here the order of the matrix is 3 by 3. So equivalence to the matrix A, your identity matrix will be I 0 0 and 0 1 0 0 0 and 1. So this will be the identity matrix of same order 3 by 3. Okay, so now what we have to do, so as this tell that आपको A को I में convert करना है with the help of operations. So चलिए क्या कर सकते हैं. So first of all basically जो आपकी R2 को अगर देखिए, so हमारा टारगेट ये होता है कि फर्स्ट पोजीशन जो है एलिमेंट का वो 1 होना चाहिए. So हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे. क्या करेंगे, हम इनको रिप्लेस करेंगे. सो जो R1 है दैट मस्ट बी इंटरचेंज विथ R2. ओके, सो इसको जो आप इंटरचेंज करेंगे, सो योर मैट्रिक्स विल बी 1 2 3 and 0 1 2 and 3 1 1. Okay, and equivalence to the this matrix that will be 0 1 0 and 1 0 0 and 0 0 1. Okay, now the next target is to reduce this 3. Okay, so for this we apply that R3 implies to R3 row 3 minus 3 times of row 1. Okay, so when you apply, so it will be 1 2 3 0 1 2 and that will be 0 minus 5 and that will be minus 8. Okay, that implies to within the identical matrix it will be 0 1 0 and 1 0 0 0 minus 3 and 1. Okay, so this will be the value. Done.
नेक्स्ट द डायगोनल ऑफ द A11 एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि दैट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कि इस केस में ऑलरेडी है. So then after what we do, then after we will make it 0. ओके, सो हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को 0 बना कर रहे हैं. सो फॉर दिस वन we implies that R3 plus 5 times of R2. Okay, so therefore your matrix will be, because I'm changing R3, so R1 and R2 एलिमेंट जो है वो सेम रहेंगे. ओके, and it will be 0 0 and it will be 2. okay, so the equivalence of this one, it will be 0 1 0 1 0 0 and that will be 5, that will be -3 and that will be 1. okay, then after what we will do, we will apply. Now the target is this, that we have to make the 0 in R1 also. okay, so we will apply the property in R1, so that will be R1 implies to R1 minus 2 times of R2. okay, so when you apply this property, so there will be a change in matrix 1, the R1, it will be 1 and 2 times, it means it will be 0 and 2 times, so it will be minus times of 1. okay, and R2 and R3 जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होंगे. सो R2 का एलिमेंट 0 1 and 2 and that will be 0, that will be again 0 and that will be again 2. okay, and equivalence to this one we got that that will be minus of 2 1 and 0, R2 no changement and R3 also there will be no change. okay, so that is 1. now what we apply the next, that the A33 element जो है that must be 1 instead of 2. so for this we divide R3 with the element 2. so the property will be that R3 implies to 1 by 2 times of R3. okay, so if you apply this one, so it will be what it will be, so it will be that 1 0 minus 1 and that will be 0 1 2 0 0 and it will be 1, and equivalence to this the matrix will be also changes and that will be -2 1 0 1 0 0 and that will be 5 by 2 minus 3 by 2 and that is 1 by 2. okay, moreover, so if you apply this thing, so if you apply the next property, so what is the target? The target is that above this one the both element must be 0. so for this, with the help of R3, so the property will be that R1
implies to R1 plus R2 and R2 that implies that R2 minus 2 times of R3. Okay, so the final matrix will be that 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and equivalent to this matrix will be that will be minus 2 plus 5 by 2. So minus 2 plus 5 by 2, that will be 1 by 2. Okay, and that will be minus 1 by 2, again it will be 1 by 2. Okay, moreover, if you apply this property, so that will be 1 minus 5, so that will be minus of 4. Okay, and that will be 3, and that will be minus ka 1, and in R3 there will be no change, so 5 by 2 minus 3 by 2 and 1 by 2, so that will be the value. So hence finally this A is converted, so it became I. So as you know, this is the matrix I, so equivalence to the I, that will be called A inverse. Okay, this is the concept. So hence we can say that A inverse will be 1 by 2 minus 1 by 2, 1 by 2 minus 4, 3 minus 1, 5 by 2 minus 3 by 2 and 1 by 2. So this is the answer. So उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स मेथड, या हायर क्लासेस में इसको हम लोग बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, जो कि कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस मैट्रिक्स पे काम करता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, so as you know, in this matrix again I am repeating it, that Gauss method, Gauss Jordan method और inverse matrix of elementary operations. So concept talk मैंने पहले किया था इसमें फर्स्ट पार्ट में. So inverse of matrix of the matrix method or elementary operations. The concept is basically the equivalence matrix पे काम करता है और इसका ये symbol होता है. So this is the symbol of the equivalence. So this thing is basically the symbol. Okay. So as you know that A is basically the given matrix, and equivalence to A, I is the matrix of same order. So this is the unit matrix. If you applied the operations, applied the elementary operation, either row or column elementary operation, that is basically row or column. Okay, so if we apply the operations over here, so it means this A matrix will convert into the matrix I, and I matrix will convert into the A inverse. So this is the concept. Okay, so this is the concept. Okay, this is the condition, that if you make that matrix A equivalence to matrix I, so after the operation it will be. Okay, so the statement is
that elementary row or column transformation which is reduced to a square matrix to the unit matrices when applied to the unit matrices and give the inverse of. So यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं. आपका क्वेश्चंस क्या है? एम्प्लॉय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. सो ए का R1 जो है रो, फर्स्ट रो जो है 0 1 2 है, R2 1 2 3 है एंड R3 जो है 3 1 1 है. सो आइडेंटिटी को हम कंसीडर करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है. और सिंस ये जो ए मैट्रिक्स है ये 3 by 3 ऑर्डर की है, इसलिए हमें आई मैट्रिक्स भी 3 by 3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा. फिर हम इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पे हमने सारे ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं और देखिए एट लास्ट ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ही बन गई वैसे उसकी इक्विवेलेंस जो मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स है. सो फाइनली दिस इज द आंसर. सो दिस इज योर ए इनवर्स and this is your answer. Okay, and it was your concept talk. So finally this is your answer. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सभी दोस्तों को नमस्कार. मैं जगदीश यादव. आज हम नेक्स्ट टॉपिक ना पढ़ करके एक प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट फाइंड द इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, so same as you know that is the question related to the Gauss-Jordan method or simply matrix method or simply a concept of matrix equivalence का concept पे questions है. ओके, सो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे करना है. सो द सॉल्यूशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दी कंसीडर दी आइडेंटिटी. सो आपका आइडेंटिटी का क्या थी आपकी याद कीजिए. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी दैट द आइडेंटिटी इज, सो consider the identity and that was A equivalents to I. Then when you apply the operations after operation it will be converted into the I, and equivalence to I it will be converted to the A inverse. Okay, so that was concept. So here that the matrix A is given. So let the matrix is given 2 5 3 1 2 3 1 0 8, and equivalence of this because the order 3 by 3 that I will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so the target of this, first of all what we do, the positional element at first row and first column का जो एलिमेंट है that must be 1. so इस 2 को मुझे 1 बनाना है. so उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को मुझे इस 2 एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है. so उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंटरचेंज करूँगा. so R1 रो R1 will be interchange with R2. okay, so R1 and R2 will be interchanged. so when you apply this operation the value will be 1 2 3 2 5 3 1 0 8. okay, and equivalence to this it will be 0 1 0 1 0 0 and
0 0 1. Okay, then what we have to do, we have to make the zeros here. Okay, so what we do, we have to make zeros. So where we have to make zeros? So we have to make zeros in place of 2 and in place of 1. So for that we develop some property. So property will be that R2 implies, what implies? That R2 minus 2 times of R1, and next property will be that R3 implies R3 minus of R1. So यहाँ R1 की मदद से R2 और R3 के एलिमेंट्स को मैं 0 बनाऊंगा. So the value will be, when we apply the above property, so R2 and R3 के जो एलिमेंट है वो चेंज होंगे, R1 का एलिमेंट चेंज नहीं होगा. So copy it. So 1 2 3. Okay, and equivalence to this, it will be 0 1 0. Since R2 और R3 के एलिमेंट चेंज होंगे, so क्या चेंज होंगे? So it will be 0, and that will be when you multiply with 2, so that will be 4, and 5 में से 4 को माइनस करेंगे, so it will be 1. Okay, and that will be 6. When you apply 3 minus 6, that will be minus of 3. Okay, when you minus from R3, it gives the 0, it will give minus 2, it will give you the 5. Okay, so it will give you the 5. Okay, moreover, in this side, it will be when you minus R2 minus 2 times of this, so again it will be 1, it will be minus of 2, it will be 0, it will be 0, it will be minus of 1, and it will be 1. Okay, now the next target is that the positional element of second row and second column, that must be 1, and with the help of this one, the above and below element must be 0. So what we apply the property? So we apply the next property, that R3 implies to that R1 implies to R3 plus 2 times of R2. Okay, and as well as we can apply that R1 implies to, so that will be that R1 minus 2 times of R2. Okay, so when we apply this property, so the matrix will be 1 0 9 0 1 minus 3, and it will be 0 0 minus of 1. Okay, equivalence to this, in this side it will be minus 2 5 0 1 minus 2 0, that will be 2 minus of 5, and it will be 1. Okay, now in the place of this corner element, that third row and third column element, that must be 1, but here it is a minus 1, so we will multiply R3
with minus R3. Okay, so when we do this, so the element will be 1 0 9 0 1 minus 3 0 0 1, and equivalence to this, that will be minus 2 5 0 1 minus 2 0, and that will be when you multiply minus sign to it, so it will be minus 2, it will be plus 5, and it will be minus 1. Okay, so now the next target, that the positional element of third row third column, the above element must be 0. So for it the property will be R2, so R2 3 times of R3. Okay, and for R1, so R1, that will be R1 minus 9 times of R3. Okay, so it will become the identical matrix. So 1 0 0 0 1 0 0 0, that will be 1, and equivalence to this in this side, it will be when you multiply with this one 9 times, so minus 18 minus, then it will be 16. Okay, so it will be 16, then after it will be minus 40, it will be 9, it will be minus 5, it will be 13, it will be minus 3, minus 2, 5, minus 1. So this is the final equivalence of I. So as you know that again it became the I. So as you know that this matrix is I, so the equivalence of I as per the statement, it will be the A inverse. So hence, so we can say hence A inverse is equal to 16 minus 40 9 minus 5 13 minus 3 minus 2 5 and minus 1. That will be the answer of the given matrix. So उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इन्वर्स कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का हम ए इन्वर्स थ्रू मैट्रिक्स मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, सो अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो आप इसे पॉज करें, 1 से 2 बार देखें, फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।